We are live now. Okay. So, welcome, friends, and greetings on the occasion of the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Uh, with the permission of the chairperson, Professor Jagmohan, uh, may we start the proceedings of this lecture series today? Yes, please. Okay. So, uh, we are honored to have with us Justice Sudhir Agrawal as our speaker. But before I come to the series and the speaker, um, I would like to mention very quickly that it is not just a coincidence. We deliberately chose to start this discussion on the birth anniversary of Gandhiji because when in 1938 the Vardha scheme was adopted, uh, there was, of course, all kinds of controversies about the scheme. It was suggested that it was read as if in the name of the autonomy of the educational institutions in the community, Gandhiji is talking of the self-sufficiency. Um, there are three important things that perhaps we need to remember in context of our ongoing webinar series and this lecture series, uh, that in response to those criticisms, Gandhiji clarified that in his schema, even though there will be autonomy of the institution and the community will be involved in the process of education, the fundamental responsibility to provide the training as well as material will lie with the state. And even the the artifacts that as part of the pedagogic process of learning through productive work, those artifacts will be taken or purchased by the state itself. And so that much central was the importance of the state, and that much central was the importance of the productive work as a pedagogic strategy in the entire learning process rather than as skill limited to one set of disciplines. And he wanted only that kind of education system to be available for every child of this country. So, an, a similar and equitable quality of education. What happened is not the subject of today's discussion. And since it was based on the productive work and located in the milieu of the child, it was based on mother tongue. So it is in this context that we are honored to start this. Uh, now, Professor Jagmohan, I request you to share the slide. We are honored to start this three-part webinar series on the state and education. And in this, uh, although we have conceptualized it as part one dealing with the question of equality in in school education, part two, which is tomorrow, again at 7 p.m., focusing on uh, commercialization of higher education, colon mechanisms and implications, and part three, which where we expect the speaker to look at specifically the NEP 2020. Uh, uh, and so that will be the broad division. However, as Professor, as Justice Agrawal has clarified,
and we all understand that these are overlapping issues. So we are honored to have with us, Justice Sudhir Agarwal as Honorable Justice Sudhir Agarwal as our speaker for these 3-part webinar series. In the AFRT, in the All India Forum for Right to Education, which is a federal platform of 80 plus member organizations and a lot of associate and fraternal organizations ranging to different ideologies, from socialists, Lohiites, and Ambedkarites, and Marxists, and other liberals, all those who believe, and Gandhians, all those who believe in the idea of shaping an egalitarian society. In this, um, the judgment that Honorable Justice Sudhir Agarwal gave in 2015 has been a very important instrument of our campaign. We were already always demanding for common education system based on the concept of neighborhood schools, as articulated by the Kothari Commission. And subsequently, we broadened it with the slogan of common education as provided, to be provided directly from the state exchequer from KG to PG, meaning higher education. So it is in that context that Justice Agarwal's judgment has been now part of our all demand charters, and we have been campaigning for its notification by the central government and the state governments. So we are honored to have Justice Agarwal as our speaker today. And one additional thing that, I mean, apart from this judgment, I would like to mention about Justice Agarwal is that he has this reputation that he did in Asia, he delivered the highest number of judgments. Any judge, any sitting judge of a court who delivered the highest number of judgments. Anyhow, in the process of this discussion, when we wrote to Justice Agarwal, we had these 5 questions in our mind, which are now in the slide. So we hope that in coming 3-part webinar series, we would be able to take on these 5 very important, very crucial questions about our education system. The format is that after the lecture by Justice Sudhir Agarwal, there will be a Hindi translation by our member of Secretariat, Sri Lokesh Malti Prakash. Thereafter, we will have question answer sessions. So this will be the format. I think with this, I can request now our honorable speaker, Justice Sudhir Agarwal ji, to take over and make his presentation. Over to you, sir, now. Hello, everybody, and a very good evening to everyone. Our main is state and as education, but it has 3 subdivisions. And today, our first subdivision part is question of equality and school education. Our subject of today itself suggests and shows that in the matter of school education, equality lacks. And that is why we are here to discuss it. How this situation has arisen, what was the position in old days, and what should be and can be done so as to remove stigma of disparity, inequality, and difference in school going children, and causing them to be imparted equal standard of education would be my endeavor to discuss today by placing my point of view in the backdrop of certain facts available on record, which I have gathered from published material and other resources. First, what is education? It is a simple word.
everybody regularly, almost every day uses it. Broadly, we know its meaning. Just to recapitulate in this discussion, its meaning will give us a better understanding in the context of various periods. Simple dictionary meaning of education is the process of facilitating learning or acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Education as a system is called a social institution through which society provides its members with knowledge including basic facts, job skills, and cultural norms and values. Purpose of education, generally believed, is to improve personal life and help society to run smoothly. Method of education includes teaching, training, storytelling, discussion, and directed research. In Sanskrit, two prominent words used for education are Vidya and Shiksha. The term Vidya is derived from Vid, which means to know, and Shiksha is derived from Sha, which means to control or to discipline. In ancient period, a stream of education was broadly in two parts. Those who were interested in vocational knowledge for training so as to make it their earning of livelihood and to serve society accordingly. Mostly they used to follow family vocation, and their education used to be imparted by senior family members like father, grandfather, relatives, etc. They used to live in their houses to undergo such education. Knowledge of Shastras used to be acquired by offsprings of those who were well versed in Shastras. Many a times this was family based. There was another system of education which was normally available at school level, at village level. Learned persons looking after it used to be called Guru or Rishi. They had residential places, normally at the outskirts of villages, where students used to go for education. These were called ashramas. Daily needs of residents of ashramas, including teachers and students, used to be taken care by village people. We can call it community care. Students followed the system of Bhiksha, and residents of village generally offered so that institution of learning, that is ashrams, may not face deficit of funds, etc., causing any inconvenience to inhabitants. In these ashrams also, education of various kinds, including vocational, used to be imparted. All students, irrespective of their family background, used to be treated equally. That is very important. Guru or teacher imparted education with same zeal and spirit to all, without making any distinction on the basis of their genesis. Here I used to give a very well-known example, which we have heard from Dwapar period. That is the friendship of Krishna and Sudama, who both were going education in the Gurukul or ashram simultaneously, having no distinction on account of their status. We do not find in history that these students had to pay any fees to Guru or Acharya or teacher imparting education in such ashrams. Education was given free at such places which were treated sacred. Relationship between Guru and Shiksha was equally sacred. We find a term Guru Dakshina, which a student after completion of his education while leaving Gurukul used to offer to his teacher according to his financial capacity. In other words, Guru Dakshina was traditionally a gesture of acknowledgement, respect, and thanks to Guru. Mostly it was monetary, but the concept was totally different than the fees of education imparted as paid today. What we are paying today, it has a different concept. There are exceptions in history
like Guru Dronacharya, who had refused to impart education to Eklavya, a tribal boy, only on the ground that he was teacher of royal family students only. Otherwise, in general, there was no distinction on the basis of caste, creed, race, status, etc. Anyone who had gone for learning used to enjoy similar status and relationship with others. Education in ancient India was available to boys and girls equally. That is how we get example of Gargi, Maitreyi, etc., who were well versed in Shastras and competed with men equally. In Ramayana, we find a reference of the expertise in combat, that is strategic skills, of Queen Kaikeyi, who is said to have assisted and helped King Dasharath in a battlefield, and on account thereof she was given privilege of demanding to take. Similarly, we find reference of Satyabhama, one of the wives of Krishna, who helped him in fighting with Narakasura. Knowledge acquired by students in different fields and ashrams used to be tested by conducting Shastrarth or competition at different places. There were also many large schools or ashrams headed by a huge number of teachers and gurus, expert in different disciplines. They were like our present day universities. These places were used to be visited by students from different places and sometimes from outside Indian subcontinent. Some of the large educational institutions known at that time were Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Ujjain, Salopiji, etc. Salopiji, it was in south. With the arrival of Muslims and establishment of Islamic State empire in Middle Ages, they also started educational institutions for imparting education. They established Islamic institutions like madrasas, and one of such well-known place of center of education in 18th century was in Delhi, namely Madrasa-e Rahimia, under the supervision of Shah Waliullah Dehlvi. It was known for favoring balanced approach in Islamic scriptures and science. In this institution established by Islamic ruler, they also favored teaching of subjects like medicine, agriculture, geography, administration, etc. In general, old and ancient system of education was not broadly interfered, but renowned non-Islamic educational places and establishments were invaded, disrupted, and virtually destroyed, sometimes in 12th century and onward. During Middle Ages, private tuitions saw rise as the state failed to invest in public education system. Tutor or Riyazi was an educated professional who earned suitable living by performing tasks such as creating calendars or generating revenue estimates for nobility. With regard to education in villages, John Malcolm Forbes Ludlow, in his work British India, Volume 1, published in 1858, at page 62 and 63, has said, in every Hindu village which has retained anything of its form, I am assured that the rudiments of knowledge are sought to be imparted, that there is not a child except those of the outcasts who form no part of the community who is not able to read, to write, to cipher. In the last branch of learning, they are confessedly most proficient. The third kind of educational institutions we come across later were established by Christians. The first such institution was established at Goa after the Portuguese settled their reign at Goa. In 1542, St. Paul's College at Goa was founded by Francis Xavier. It is said that there also education was free of charge. French traveler Francois Pirard de Laval, who visited Goa around 1608, had recorded that there were 3,000 students from all the missions of Asia. It shows that the said college used to impart education to those who were
related with the missionary job in Asia. In 18th century, substantial part of India came under the rule of Britishers by the East India Company. In 1813 Charter of East India Company, a duty was laid upon company to educate and assist previously excluded Christian missionaries and to educate population in addition to company corporate activities. For implementing this duty, there was a division among the officers of company on the language in which education should be imparted. There was one section who favored classical or old languages like Sanskrit or Persian, while the second group, comprising of learned William Bentinck and Thomas Macaulay, believed strongly that traditional India had nothing to teach regarding learning skills, and best education for them would happen in English. Macaulay was in favor of system of education which would create a class of anglicized Indians and would serve as cultural intermediary between British and India. During 1820 and onwards, we find establishment of missionary schools in India to certify British education. Sir Thomas Munro's minutes on native education in 1822 to 1826 shows that in metro presidencies, there were 11,758 schools and 740 centers for higher education. Except few European missionary schools, these were funded and managed at community level. Number of students recorded was 1,61,667, out of which only 4,023 were girls. According to Adams' inquiry, around 1835, there existed approximately 1 lakh village schools in Bengal presidency only. You all know there were 3 main presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. However, these schools were criticized as rudimentary, well below European standards, cultivating little more than memory. Macaulay succeeded in enactment of English Education Act 1835, and thereby Persian was replaced by English as administrative language. Use of English as medium of instruction and training of English speaking Indians and teachers. It is said that he was inspired by utilitarian ideas and called for useful learning. In 1854, a number of reforms in companies' education system in British India were suggested by the then Governor General Dalhousie, and the same were again reviewed following reports submitted by William Hunter in 1883, that is Indian Education Commission 1882. Thereon, traditional schools got dissipated and we got educational network with Western curriculum based on instructions in English. This education obviously was available particularly to ambitious upper class people. Many of them, to advance their career, went abroad also, like England. We know some of them like Bapu, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, etc. By 1887, out of 21,000 mid-level civil services appointments, 45% were Hindu, 7% Muslims, 19% Eurasians, and 29% Europeans. 1,000 top-level positions were almost held by Britons, typically with Oxbridge degree. Slides show that by 1890, about 60,000 Indians had matriculated, mainly in arts or law. About 1/3 entered public administration, and another 1/3 became lawyers. I'm not going into further details due to paucity of time, but it is a matter of common knowledge that same old pattern and syllabus, as advanced with Macaulay, policy was followed in independent India by the then ruling National Party. The first national policy in education was promulgated in independent India by the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, second by the then Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, and third very recently by the present Prime Minister Shri Narendra Modi in 2020. In 1964, a
resolution was moved in Parliament by Shri Siddeshwar Prasad, a Congress member of Parliament, who criticized government for not paying enough attention to education. He said that central government lacked a uniform vision and definite philosophy for education. Government thereafter formed a 17 members education commission under the chairmanship of Shri G.S. Kothari, and it is commonly known as Kothari Commission. The policy called for national school system, which meant that all students, irrespective of caste, creed, sex, would have access in education of comparable quality up to a given level. It envisaged a common educational structure, that is 10 plus 2 plus 3, which was accepted across the country. It also advocated use of mother tongue as medium of teaching in early school years, and also emphasized on strengthening research in universities. Second policy came to be issued in 1986. It was updated in 1992 by the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao. It focused on modernizing and growth of IT education. More attention sought to be paid on restructuring teachers' education, early childhood care, women's empowerment, and adult literacy. It also emphasized on autonomy of universities and colleges. Second policy conferred a larger authority upon the central government in view of the fact that earlier education, which was in state list, that is 7th schedule, list 2 of the Constitution, but with 42nd amendment in 1976, 5 subjects were transferred from state list to concurrent list, that is schedule 7, list 3. They included education, forest, weights and measures, protection of wildlife, wild animals and birds. In view thereof, schemes like Sarv Shiksha Abhiyan, midday meal scheme, and Navodaya Vidyalayas were started by central government. Unfortunately, in all these schemes, no serious attention was paid to the standard of education made to rural students, mostly belong to poor families or those residing in urban or semi-urban areas. So far as the recent policy of 2020 is concerned, I defer discussion thereon, as we are scheduled to have it in our discussion day after tomorrow. Summarizing at this stage, I can say that in a gradual way, starting from Macaulay's time, in the system of education, a broad division and discrimination commenced in the society with respect to quality and the standard of education, and it got broadened with the passage of time persistently. Unfortunately, even till this date, we do not find any serious attempt or endeavor to remove it. Taking cognizance of such classification at ground level, actually existing, in my judgment, in Shiv Kumar Pathak and others, versus State of UP and others, writ petition number 57476 of 2013, decided on 18th August 2015, I have categorized schools imparting elementary education in 3. The first category, schools imparts education to largest group comprising poor people, poor rural people. These are those schools which are run by state authorities and can be termed common man schools. The institutions imparting education to elite and highly privileged category of people are termed as elite school. The third category comprised of schools catering to need of mainly middle class or people above poverty line as semi-elite schools. Normally, we will not find parents who can afford to voluntarily going for admission of their wards in a primary school run by government. Here in the context of the state of UP, I may point out, since 1972, with the enactment of Basic Education Act 1972, schools funded and managed by state are under the control of UP Basic Education Board, and they are being supervised and managed by UP Basic Education Board. To the extent of financial capacity, most parents go for private schools in the category of semi-elite or elite schools.
But basically, elite schools are beyond financial capacity of the people even up to middle class. They are basically approachable by rich and resourceful. Obviously, they opt for elite schools. I will give an illustration of such schools after a little bit. Immediately after independence, in earlier days, elementary schools were mostly run and managed by local bodies like Nagar Palika, Zilla Parishad, etc. These local bodies were represented by elected members, and they at that time had some spirit maintained in a much better way. I find that most of us, like me, have gone to elementary schools in 60s and 70s in such schools. Even educational institutions of secondary level managed by state government were also maintaining a superior standard. Number of private schools was very less and mostly in urban areas. They were mainly managed by Christian missionaries. In larger cities, there were one or two missionary schools, which we can say that they were private schools at that time. With the passage of time, when the status of elected members became symbol of stature and the people become more interested in perks and privileges, instead of their public duties, schools run by local bodies started deterioration. Appointment of teaching and non-teaching staff became a source of individuals' obligations instead of merit and welfare of students. It added to pace of deterioration. Since the demand and need are directly proportionate to each other, deterioration of these schools caused increase in number of private schools. In my view, in the state of UP, biggest inflow of private schools came with the enactment of UP Basic Education Act 1972, when all primary schools maintained by local bodies were transferred to the basic board. Thereby, government officials became authorized to manage these schools without any element of accountability or involved interest. They were not made a stakeholder in the primary school system so as to be more careful in taking care of standard of education therein. In the so-called discharge of constitutional obligation of free education to children of age between 6 to 14 years, number of primary schools maintained by basic board got multiplied. Today we have about 1,75,000 such primary schools in the state of UP. But standard of education therein had a nosedive. In the last several decades, situation has gone alarming, but unfortunately nobody is thinking on this aspect seriously. Today, if we demand that children of those persons who are capable of sending their wards to private primary schools must necessarily send to government primary schools, it is treated as offending by them, as if a punishment has been pronounced. Government primary schools have become destiny of those children whose parents are poor and who cannot afford their wards to be sent in a good private primary school. They have no option but to send them in government school as their destiny and had to feel satisfied with that. In this way, the system has deprived majority of people a good standard of education or at least reasonable appropriate level at primary stage. Once they are denied appropriate level of education in primary schools, they find no standing in subsequent level of education, namely secondary or further higher education. The broad classes have been created. Firstly, majority of have-nots who are not given even appropriate primary education and thereby compelled to live in same pathetic conditions as their forefathers were. Second is the category of people who are resourceful enough, can afford a better standard of education at primary level to their children, and can also manage further studies and get opportunities to be a part and parcel of the system.
What is the fault of majority people except their poverty, which has resulted in depriving them even primary education at par, despite the fact that it is the constitutional obligation of the state and very high budget every year is allocated for primary education. More or less conditions prevailing in the state of UP are similar in other states, also with binder verifications. I have not given the details of the budgetary allocation as such, the facts and figures. I may tell you, in the financial year 2021, the central government has allocated a total budget to education more than 99,000 crores. And out of it, more than 59,000 crores is for elementary education and literacy. In the state of UP, 13.5% budgetary allocation is for elementary education. But still, nothing is improving. There is another angle. Denial of equal standard of education to poor people is also a facet of violating their human rights. Across the world, these days, there is a lot of discussion on basic human rights. As per Charter of United Nations, human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or other status. Human rights includes Human rights includes right of life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. Charter of Human Rights adopted by General Assembly in United Nations is called as Universal Declaration of Human Rights. It is a document claimed to be a milestone in the history of human rights. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, entered into force in 1976, seeks to promote and protect certain rights, which include right of education and enjoyment of benefits of cultural freedom and scientific progress. Right to education does not mean a bare structure regardless of quality, standard, and basic amenities. Infrastructure in pitiable condition, incompetent teachers or no teachers, and lack of other basic amenities cannot be said to be observance of right of education of people who have to undergo education in such places. Children of poor rural people are being deprived of appropriate educational system vis-a-vis other people who are more resourceful than these poor people. In fact, people who have little resources to manage their wards in private schools do not think of sending their wards in government schools at all. In comparison to the people who lack such resources, the earlier one can be said to be richer to them. This wide apparent and evident discrimination exists and is being practiced and allowed to continue without any attempt to remove it. Thus, I strongly feel that basic human rights of equal education of children of poor people are being violated with impunity. Now, at this stage, I may give you the illustration of setting up of a special type of schools for creating this division more apparent. Many of you may have heard the Sanskriti schools. The first one was established in Delhi in 1998. Now, according to the record, the then Cabinet Secretary, Mr. Subramaniam, chaired the meeting with several other secretaries of government departments, and they decided to establish a Sanskriti school at Delhi, which will take care of the education of the bureaucrats, the Group A officers of the central government who are transferred from one place to another.
The reason given by them was that during after transfer, they get some kind of difficulty in admission in renowned primary or elementary private schools. There was no complaint that they had any problem in getting admission in the government schools, but they were not interested in government schools. Since they felt some difficulty in getting admission to their wards in selected or renowned private primary schools or elementary schools, so they decided to set up a school known as Sanskriti School. At that time, different departments of the government contributed very generously, and crore rupees was contributed by different departments like Ministry of, like various ministries, the autonomous bodies of the government, societies of the government, and corporations of the government. Even some state governments also contributed, because the top bureaucrats, you know, they are all part and parcel of the same system. They interestingly provided a reservation to the extent of 60% in the school to the wards of the Group A officers of the central government. 10%, 25% they claim to reserve for weaker section, 10% for non-government sector, and 5% for staff. I've tried my best, but I have not been able to find any list of those so-called weaker section students who got admission and were given education in this school. The wife of cabinet secretary is the ex officio chairperson of the board of management of this school. The society was formed in 1995 and the school became operational in 1998. This reservation for Group A officers that was challenged in a PIL before Delhi High Court in sometime 2005 or 2006. Delhi High Court took 10 years to decide the matter, and in 2015, this reservation of 60% was struck down. The state authorities, the officers were not satisfied because it was a blow to their privilege of having their students treated separately, independently in a school which has no problem of funds, etc. They went to Supreme Court. Unfortunately, on 8th June 2016, Supreme Court stayed the High Court judgment, and thereafter what happened, I don't know, because I could not find any information in the net. Now, one thing I could get from record, that in Supreme Court, the central government filed an affidavit claiming that this kind of institution is very successful and we are producing very meritorious students, without informing that who are these students or the kind of students whom the teaching is being given. And they said that we are planning to establish similar Sanskrit schools in all these states. In the state of UP, in 2016 or 17, more than 200 crores were given by the state government for establishment of a similar school of Sanskrit school at Lucknow, and that became operational in 2017. There also the same position is continuing. So the bureaucrats, they made a further distinction by causing a distance from the poor rural people, and they have reserved a place for their wards separately, ignoring this fact that their first responsibility was to improve upon the education standard in the government primary schools, whose funds are coming through them. The government is providing enough funds, but actually they are not reaching at the ground level. The condition of the government schools broadly is precarious. No building or dilapidated condition of building, no toilets, no electricity, drinking water problem, and teaching staff, less is better.
They don't know how to teach. These primary schools run by the government, they are basically for education. Employment is a secondary aspect. But what the government has done, they have made employment as the primary thing. Education may go, it may ruin, doesn't matter. Let everybody, whether he can teach or not, be given some benefit by appointing him in the government schools. Whether it will give any advantage or add to the standard of the school or not, doesn't matter. Now, one more aspect on this, which is also important. If we improve upon the standard of education in primary schools run by the government, the wards of poor people will get a better education. They will acquire a better merit. And after getting a standard and meritorious education up to in the elementary school, they will compete with their merit in the higher schools, for example, secondary or professional schools. They will then not require to have any kind of reservation for them because they can compete with their own merit. With the passage of time, I don't say that anything can happen in a year, 2 or 10, but with the passage of time, the problem of reservation by itself will wither away, because these people who constitute the majority of our population, whether you see poverty line every day is differing. Nobody is clearly identifying what is the poverty line. But whether they are 60% or 70%, I am not taking figure as such, but they constitute majority. Everybody knows it. If these majority people, their wards will get standard education, they will compete with the other class students on their own merit. They will not be bothering for any reservation, etc. They can compete on their own merit and see the volume of meritorious students which will be available to our country for its development. That's why I said that the real problem is not the establishment of the schools, not the funding, but the execution of the policy. You see, the persons who are made executors, that the education authorities, they have no stakes in the system. They have no problem if the school is working or not working, whether teacher is competent or not. If their wards are sent to the schools run by the state governments, in the evening, the son or daughter will inform the father that today such and such teacher did not come to the school, or drinking water is not available, toilets are unclean, or there is no toilet for girls, and so many things. First-hand information will be available to the persons who are responsible for maintaining and managing these schools. And within 24 hours or 2 or 3 days, everything will be removed. Because when you become a stakeholder, you become more concerned for the improvement of the system. But when you have no concern, then chalta hai, chalne do, hame kya matlab, hamara kya hai? It is something like that. We don't care. My suggestion for giving equal education to all children is only this much, that the majority of schools, which are definitely being provided by the state funds, the state is managing them, they must provide a standard education to the students. Most of the beneficiaries, or mainly the only beneficiaries of the schools, are the poor people. For their benefit, if collectors and SPO's son can read together in the same school, I'm 100% sure that the standard of all these institutions will improve a lot. Thanks, bro. Thank you, sir, for a very thought-provoking lecture. We will take up the discussion subsequently, but let me request my friend Lokesh for a summary translation in Hindi. Lokesh, are you there? जी विकास जी मैं जी। शुरू करता हूँ.
जस्टिस अग्रवाल ने जो अपनी बात कही है, मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में उसको हिंदी में रखने की। उन्होंने आज का जैसा ये जो 3 दिन का लेक्चर का सीरीज है जस्टिस अग्रवाल का, जिसका शीर्षक राज्य और शिक्षा का जो मुद्दा है इस समय, राज्य की जिम्मेदारी और शिक्षा का मुद्दा, उसकी पहली कड़ी में आज स्कूली शिक्षा में बराबरी के सवाल पर जस्टिस अग्रवाल ने अपनी बात रखी। और इसमें उन्होंने इसके इतिहास में जाते हुए और कैसे स्कूली शिक्षा में गैर बराबरी का बढ़ी, उसको बताते हुए कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इसके बारे में अपने विचार रखें। उन्होंने सबसे शुरू में कहा कि शिक्षा में बराबरी का सवाल, यह शीर्षक अपने आप में दिखाता है कि आज के दौर में शिक्षा में बराबरी नहीं है। इसीलिए हम बराबरी के सवाल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की शिक्षा में बहुत सारी गैर बराबरियां मौजूद हैं। उन्होंने अपनी लेक्चर के शुरुआत में शिक्षा क्या है इस पे रोशनी डाली, और उन्होंने बताया कि ज्ञान और मूल्यों, आदतों को आत्मसात करने की प्रक्रिया और एक सांस्कृतिक विकास जो लोगों का होता है, उसको शिक्षण के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से पढ़ाने के माध्यम से, इसको शिक्षा कहा जाता है मोटे तौर पे। इसके बाद उन्होंने प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखी, और ये बताया कि उस समय 2 तरह से शिक्षा दी जाती थी। एक तो तरीका था कि जो परिवार है, उस परिवार में कुछ खास कुशलताएं थी जिनको देने के लिए व्यवस्था थी, तो परिवार के सदस्य ही परिवार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे। तो परिवार का जो एक व्यवसाय था, उत्पादन का व्यवसाय था, उसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाता था। दूसरा था शास्त्रों की जो शिक्षा दी जाती थी, शास्त्रों की तालीम दी जाती थी, उसमें भी परिवार की ही भूमिका रहती थी, वो भी परिवार पर आधारित थे। एक और व्यवस्था थी जिसका उन्होंने थोड़ा और विस्तार से जिक्र किया, वह था गुरुकुल, गुरुओं के आश्रम की व्यवस्था। तो गांव के स्तर पे कुछ ऐसे विद्वान लोग होते थे जो शिक्षा एक तरह से दान में देते थे उस समुदाय के लोगों को, और वो आमतौर पे गांव के आसपास उनका आश्रम होता था, जहाँ पे बिना भेदभाव के गांव के समुदाय के बच्चे आते थे। और सबसे खास बात ये थी कि इन आश्रमों की सभी जरूरतें जो थी वो समुदाय उसका ख्याल रखता था। गुरु कोई फीस नहीं लेते थे, कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया जाता था, ये बड़ी खास बात थी। और जो गुरु दक्षिणा की व्यवस्था थी भी, वो एक सम्मान और धन्यवाद के भाव के साथ गुरु को दी जाती थी। उसमें कोई विद्यार्थी से पैसे वसूलने का भाव बिल्कुल नहीं रहता था। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस समय ये जो व्यवस्था थी उसमें जेंडर का, मतलब लिंग का भेदभाव नहीं था। तो गार्गी जैसी विद्वान महिला और कैकई जो युद्ध के कौशल में बड़ी उन्होंने कुशलता हासिल की थी, तो इस तरह गुरुकुलों की व्यवस्था चलती थी। और जो मूल्यांकन था उसके लिए शास्त्रार्थ होते थे। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े भी आश्रम होते थे गुरुओं द्वारा संचालित, और वो विश्वविद्यालय जो आज के हैं उनसे मिलते जुलते एक तरीके से थे। इसमें तक्षशिला और उज्जैन जैसे कुछ नाम हैं। ये प्राचीन काल के बाद मध्य युग में जब इस्लामी जो शासन स्थापित हुआ, तो उस दौरान मदरसा जैसे इस संस्थाएं बनाई गईं, और जो पुरानी व्यवस्था थी उनमें कोई छेड़खानी नहीं की गई, उसको चलने दिया गया। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में मदरसा रहीमिया नाम की एक संस्था बनी, जहाँ पे साइंस की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, ज्योग्राफी, भूगोल की शिक्षा, मेडिकल, चिकित्सा की पढ़ाई होती थी, और साथ में धार्मिक पढ़ाई भी होती थी। तो ये एक तरह का मिश्रित पढ़ाई का तरीका मध्य युग के मदरसों में भी स्थापित हुआ। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि कुछ जगहों पे हालांकि जो खास तौर से जो कुछ प्रसिद्ध पुराने संस्थान थे प्राचीन काल के, उनको जरूर रोका गया, उनके कामकाज में रोक लगाई गई, उनको नष्ट किया गया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के इतिहास पर वो आते हैं और ये बताते हैं कि जो शुरुआती दौर था उसमें ऐसी कई रपटें अंग्रेजी प्रशासकों ने लिखी थी, जिसमें खास तौर से नाम उन्होंने लिया जॉन लुडलो की रिपोर्ट 1858 की, जिसमें ये कहा गया कि हर हिंदू गांव में ज्ञान का कोई ना कोई एक चिन्ह, एक झलक जरूर मिलती है, जो सभी लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन
सिवाय उनके जो आउटकास्ट हैं, मतलब कि एक तरह से निचली जातियों के लोगों को छोड़ के जो बाकी जातियां हैं उनके लोगों में ज्ञान किसी तरह का देखने को मिलता है, ये एक रिपोर्ट में कहा गया। फिर इसके बाद जस्टिस अग्रवाल आते हैं कि जो क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो ईसाई संस्थाएं जो थी उनके द्वारा जो स्थापित किए गए थे शैक्षणिक संस्थान, तो उनमें से एक उदाहरण सेंट पॉल्स कॉलेज का है, जो 1542 में स्थापित किया गया, और वहां पे भी मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे कैसे प्रशासनिक व्यवस्था बदलाव हुए, इस पे जस्टिस अग्रवाल ने अपनी बात रखी है। जैसे 1830 के चार्टर में शिक्षा को ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी बनाया गया। फिर उसी दौरान संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी कि शिक्षा संस्कृत का ज्ञान था पुराना वो दिया जाना चाहिए या अंग्रेजी का जो आधुनिक ज्ञान है वो बहस चली, जिसमें मैकॉले का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि मैकॉले जो है वो एक अंग्रेज हिंदुस्तानियों के एक वर्ग का निर्माण करने की बात करते हैं अपने नीतिगत दस्तावेजों में। और फिर बाद में 1835 के आसपास वो अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना होती भी है, होनी शुरू हो जाती है, उसको एक नीति के तौर पे मान लिया जाता है। और फिर 1882 में हंटर कमीशन बनता है, शिक्षा का पहला कमीशन जो अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को लगभग नष्ट कर दिया गया। और इस दौरान एक ये भी ट्रेंड देखने को मिला कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, विलायत जाते हैं पढ़ाई के लिए, जिसमें खुद महात्मा गांधी शामिल रहे, नेहरू, जिन्ना, और ये सभी लोग बाहर जाके पढ़ाई किए, इंग्लैंड में गए। और एक विभाजन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया जस्टिस अग्रवाल ने, कि जैसे नौकरियां जो थी उसमें जो सबसे उच्च वर्ग की नौकरियां थी, जो क्लास 1 की नौकरी जिन्हें हम कह सकते हैं, उनमें अंग्रेजों का वर्चस्व था, हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी कम गुंजाइश थी। लेकिन जो मध्यम स्तर की नौकरियां थी उसमें हिंदुस्तानियों की पैठ थोड़ी ज्यादा थी। इसके बाद आजाद भारत के दौर में आते हैं और फिर इसमें 3 नीतियों के बारे में जिक्र करते हैं कि 1968 में, 1986 में और आज 2020 में जो 3 नीतियां बनी। तो फिर इसके इतिहास पे जाते हैं जस्टिस अग्रवाल अपने वक्तव्य में, और उन्होंने बताया कि 1964 में संसद में एक सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, और ये कहा उस प्रस्ताव में कि शिक्षा पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद ही सरकार ने कोठारी कमीशन बनाया, कोठारी आयोग की स्थापना की, जो आजाद भारत का पहला पूरी समग्र शिक्षा पे एक आयोग था। और इस आयोग ने भेदभाव रहित राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की सलाह दी, और उसमें अपने मातृभाषा में शिक्षा की सलाह भी कोठारी कमीशन ने दी थी, कॉमन स्कूल सिस्टम और साथ में मदर टंग में एजुकेशन की बात थी। इसके बाद जो 1986 में शिक्षा नीति आती है, जिसको 1992 में संशोधित किया जाता है, इस नीति में जो ऑटोनॉमी की बात की गई, संस्थाओं की स्वायत्तता की बात की गई, और एडल्ट लिटरेसी जो है उसकी बात की गई थी। इसमें खास बात जो उन्होंने कही अपने वक्तव्य में, कि जो केंद्र सरकार थी उसके पास ज्यादा अथॉरिटी इस शिक्षा नीति में आई, और इसकी वजह ये भी थी क्योंकि इससे पहले संविधान का संशोधन किया गया था, जिसमें शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची से राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जिससे केंद्र सरकार का अख्तियार जो है शिक्षा पे वो काफी बढ़ गया था। फिर इसी शिक्षा नीति के बाद नवोदय विद्यालय की स्कीम, मिड डे मील की स्कीम, और बाद में सर्व शिक्षा अभियान जैसे नीतियां बनी। लेकिन फिर इसमें उन्होंने एक आलोचना भी की कि जो गांव की शिक्षा थी, गांव के स्कूलों और गांव के विद्यार्थियों की जरूरतों पर इन सभी नीतियों में ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि मैकॉले के समय से जो भेदभाव के बीज बो दिए गए थे, वो भेदभाव लगातार बढ़ता रहा, और आजादी के बाद भी ये बढ़ता रहा। शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो पूरे स्कूली शिक्षा तंत्र में जो गुणवत्ता थी वो लगातार गिरती रही, और कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया इसको सुधारने के लिए, ये उन्होंने कहा। इसके बाद जस्टिस अग्रवाल अपने 2015 के फैसले को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस फैसले में उन्होंने इस बात पे ध्यान आकर्षित किया था कि आज के हालत में जो आज की सच्चाई है इस देश की, उसमें 3 तरह के स्कूल बन गए हैं। एक तो साधारण स्कूल है, जो आम सरकारी स्कूल,
जो आम लोगों के लिए, खासतौर से गरीब लोगों के लिए होते हैं, और एक दूसरा वर्ग है स्कूलों का जो अभिजात एलीट स्कूल्स हैं, जो इस देश का सबसे रईस, सबसे धनी वर्ग है, उस वर्ग के बच्चे जिस स्कूलों में जाते हैं, और एक मध्यम अभिजात स्कूलों की कैटेगरी है, सेमी एलिट स्कूलों की कैटेगरी है, जहाँ पे आमतौर पे मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, ये विभाजन की तरफ उन्होंने इशारा किया और फिर आगे बताया कि जब आज़ादी मिली थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस समय ज्यादातर जो सरकारी स्कूल थे वो स्थानीय स्तर पे जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायत हो गई या शहरों में जो नगरीय निकाय हो गए, नगर निगम वगैरह जैसे, तो वो उसको मेंटेन करती थी। तो एक स्थानीय स्तर पे उनका प्रशासन होता था और एक जिम्मेदारी के भाव से लोग मेंटेन करते थे, उसको चलाते थे। और ऐसे ही स्कूलों में उन्होंने बताया कि खुद जस्टिस अग्रवाल ऐसे ही सरकारी साधारण स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और इनकी पीढ़ी के बहुत सारे लोग ऐसे सामान्य स्कूलों से, साधारण स्कूलों से पढ़ के निकले। प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और ज्यादातर वो मिशनरियों द्वारा चलाए जाते थे। बाद में जैसे जैसे सार्वजनिक संस्थाओं के चरित्र में गिरावट आई, उसी के साथ साथ सरकारी स्कूलों के गुणवत्ता में भी गिरावट आती गई और निहित स्वार्थों के लिए उनका एक तरह से इस्तेमाल हुआ, उनको अनदेखा किया जाने लगा। फिर उत्तर प्रदेश के खास संदर्भ में उन्होंने बताया कि 1972 में बेसिक एजुकेशन एक्ट यूपी में पास हुआ और इसमें जो सरकारी स्कूल थे उनको स्थानीय जो निकाय थे, नगर निगम या पंचायत, उनसे उनके हाथ से लेकर के राज्य शिक्षा विभाग के हाथ में उनको दे दिया गया। अब इससे ये हुआ कि जो अधिकारी थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी राज्य सरकार की, उसके अंदर चूंकि कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं था इन स्कूलों के प्रति, वो काफी एक नौकरशाही तरीके से ही इसको देखते थे। तो जाहिर बात है कि इन स्कूलों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती गई और आज के दौर में स्थिति ये बन गई है कि जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग महंगे स्कूलों की शिक्षा को खरीद नहीं सकते हैं, उनकी तकदीर एक तरीके से साधारण सरकारी स्कूलों के हवाले कर दी गई है। तो इस समय शिक्षा का जो एक वर्गीकरण, विभाजन, बड़ा विभाजन हमारे आज के दौर की शिक्षा का है, वो विभाजन है एक तरफ उस गरीब व्यक्तियों की शिक्षा का, गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का, जो महंगी शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं और इसीलिए वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दूसरी तरफ अमीर वर्ग है जो महंगी से महंगी शिक्षा खरीद करके अपने सामाजिक उन्नति के दरवाजे अपने लिए खोल सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उन्होंने इस बात पे ध्यान खींचा कि ये जो हालत बनी है, अच्छी शिक्षा न देने का, जो बहुसंख्यक वर्ग है देश का, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देने की जो हालत है, इसको उन्होंने कहा कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जो बुनियादी मानवाधिकार जिनको माना गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनका उल्लंघन होता है जब आप शिक्षा का अधिकार लोगों से छीनते हैं। जस्टिस अग्रवाल ने उदाहरण दिया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जो स्वीकार किया था, उसमें माना गया था कि जीवन का अधिकार, काम का अधिकार, आजादी का अधिकार, इन सब और तमाम और अधिकारों के साथ साथ शिक्षा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है जो बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को मिलना चाहिए। इसके बाद 1976 में सामाजिक आर्थिक अधिकारों के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, उसमें दोबारा शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई, माना गया, उसे बुनियादी मानवाधिकार माना गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को नकारना, शिक्षा से वंचित करना किसी भी वर्ग को, ये उस वर्ग के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और ये गलत है। उन्होंने फिर आगे कहा कि लेकिन शिक्षा का अधिकार देने का मतलब ये भी नहीं होता है कि किसी भी तरह के स्कूल में जिसमें ना कोई बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें ना प्रशिक्षित शिक्षक हैं, ऐसे स्कूलों में डाल देना बच्चों को, ये भी शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसीलिए फिर आगे उन्होंने कहा कि ये जो सरकारी स्कूलों का जो की हालत खराब कर दी गई है हमारे देश में, ये एक तरह से मानवाधिकारों का हनन है। फिर एक उदाहरण उन्होंने दिया, जो ये भेदभाव की संस्कृति कैसे नौकरशाही में पनपी है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने 1998 में दिल्ली में संस्कृति स्कूल बनाया गया था, उसका उदाहरण दिया।
और ये स्कूल बेसिकली ये था कि जो उच्च अधिकारी होते हैं सरकार के, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, उन लोगों ने जो दिल्ली में थे ये कहा कि भाई हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है जो नामी गिरामी निजी स्कूल है। ये ध्यान उन्होंने, जस्टिस अग्रवाल ने ये ध्यान दिलाया कि ये आईएएस अधिकारी, जो सीनियर आईएएस अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि निजी, नामी गिरामी निजी स्कूलों में हमारे बच्चों को एडमिशन मिलने में परेशानी हो रही है, इसलिए हम एक अलग स्कूल अपने लिए बनाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने में हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है। इसके बाद बड़े अभूतपूर्व तरीके से सरकार के हर विभाग ने और यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी खूब उदार भाव से पैसा लगाया और दिल्ली में एक महंगा संस्कृति स्कूल बना, जिसमें 60% सीटें इस स्कूल की क्लास 1, क्लास ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई। और इसके अलावा और भी कई वर्ग बनाए गए जिनके लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उसमें एक ये भी था कि गरीब जो सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन जिन्हें बोला जाता है, उनके लिए भी 5% सीटें रहेंगी। लेकिन जस्टिस अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उनको इन 5% बच्चों की लिस्ट नहीं मिल पाई है। 5 नहीं, शायद 25, शायद 25%। ओके, सॉरी। तो 25% जो गरीब तबके के बच्चों का एडमिशन होना था, वो कौन से बच्चे हैं, उनकी लिस्ट क्या है, ये आज तक नहीं मिल पाई है। तो जाहिर बात है संदेहास्पद है। खैर, इस स्कूल में जो 60% क्लास ए के ऑफिसर्स का, के बच्चों का रिजर्वेशन आरक्षण था, उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, और 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई, इसको कहा कि ये गलत है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दिया। यानी कि जो व्यवस्था थी क्लास 1 के अधिकारियों के बच्चों के लिए सीटों को बनाए रखने की, वो जस की तस बरकरार है। उसके बाद क्या हुआ उसकी कोई खबर अभी नहीं है। 2015 में यूपी में एक ऐसे ही स्कूल के लिए, लखनऊ में एक ऐसे ही स्कूल को बनाने के लिए एक कवायद चली, और अन्य कई राज्यों में भी जो नौकरशाही हैं, जो सीनियर नौकरशाह हैं, वो अपने बच्चों के लिए अभिजात स्कूल बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस अग्रवाल ने बताया अपने वक्तव्य में आगे बढ़ते हुए कि जो नौकरशाही है वो शिक्षा में जो भेदभाव आज बना हुआ है, जो भेदभाव की खाई है, उसको और चौड़ा करने का काम कर रही है। और हालत ये हो गई है, उन्होंने अपने वक्तव्य में पहले बताया था कि जो बजट है, सरकारी बजट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे 2021 में 99,000 करोड़ जो केंद्र सरकार का बजट था, उसका लगभग 45% स्कूलों के लिए था। ये तथ्य उन्होंने बताया, और ये कहा कि ये सरकार की तरफ से पैसे तो काफी ग्रांट किए जा रहे हैं तालीम के लिए, स्कूली तालीम के लिए, लेकिन वो पैसा जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्कूलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि जो स्कूली शिक्षा है, इसको इस समय शिक्षा के उपकरण की बजाय, शिक्षा देने के उपकरण की, साधन की बजाय नौकरी देने का साधन ज्यादा मान लिया गया है। मतलब कि कैसे अप्रशिक्षित और तरह तरह के अयोग्य लोगों को स्कूलों में शिक्षक के बतौर पे भर्ती कर दिया जाए, इसका एक राजनीतिक खेल ज्यादा बन गया है, न कि शिक्षा देने का साधन। और फिर जस्टिस अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर स्कूलों की हालत सुधारी जाए, बेहतर बनाई जाए, सरकारी स्कूल व्यवस्था बेहतर हो, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं वे भी मेरिट और अपने अपने मेरिट से आगे बढ़ेंगे। उनका जो मेरिट है, उनका जो उनकी प्रतिभा है, उसमें निखार होगा, उनकी प्रतिभा बढ़ेगी, और फिर आगे बढ़ने के लिए, उनको आगे की शिक्षा के लिए उनको रिजर्वेशन की, आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ देश के विकास के लिए एक प्रतिभा संपन्न लोगों की संख्या, बड़ी संख्या भी हमारे पास होगी, अगर हम सरकारी स्कूली व्यवस्था को बेहतर बनाए तो फिर आगे वो बोलते हैं, अपने वक्तव्य का समापन करते हुए वो बोलते हैं कि आज जो कमी है वो पैसे की भी नहीं है, वह नीति भी नहीं है, बल्कि यह है कि जो लोग स्कूलों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, खुद उनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाते हैं। यानी कि जितने सरकारी स्कूल हैं, उसकी जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पे है, जिन अफसरों पे है, जिस नौकरशाही पे है, उनके बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं। तो शिक्षा की समता मूलक तालीम, एक स्कूली शिक्षा में बराबरी कैसे हासिल हो, उसको लेकर
जस्टिस अग्रवाल की सलाह ये है कि ऐसे स्कूल बने जिसमें चपरासी का बच्चा भी पढ़े और कलेक्टर का बच्चा भी पढ़े। जिस दिन ऐसे स्कूल स्थापित होंगे उस दिन हम स्कूली व्यवस्था में, स्कूली शिक्षा में बराबरी की जो चुनौती है उसको हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू लोकेश। तो जिस दिन ऐसे स्कूल बनेंगे जहां चपरासी का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा एक साथ पढ़े तो शिक्षा में सुधार भी होगा और देश का विकास भी होगा। शशांक, आप फेसबुक और चैट बॉक्स के सवाल पढ़ें जब तक आप उसकी तैयारी करें। खाली मैं एक छोटा सा इशू जस्टिस अग्रवाल से रेज कर रहा हूँ कि आपने ये जो पॉलिसीज की बात की, इस दरमियान 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बना। तो मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उसने जिस तरह मतलब कॉन्ट्ररी टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन कैसे इस वर्गीकरण को स्कूलों के और मजबूत किया है, अगर उस पे आप अपनी टिप्पणी करें तो काफी मददगार होगा शायद श्रोताओं के लिए। ये मेरा सवाल है। कुछ और सवाल पढ़ ली जाए अगर पढ़ सकते हैं तो, फिर सर से जवाब ले लेंगे। शशांक, आर यू देयर? ये तो मैं तो राइट टू एजुकेशन वाले एस्पेक्ट को जवाब दे दूं। Yeah, and Shashank, in case Shashank is not there, then Lokesh, you may have to read it from the Lokesh or Surjit. Okay? Yes, sir. यस, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बना है, आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले उन्नी कृष्णन का एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 92-93 में, जिसपे उन्होंने और डिटेल में एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। हालांकि वो मैटर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, हायर एजुकेशन का था, लेकिन उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये आया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, उनका एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। उसी जजमेंट का ये ऑब्जर्वेशन जो है बाद में मोहिनी जैन और कुछ और जजमेंट्स में रीट्रेटेड किया गया और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर पड़ा कि ये राइट टू एजुकेशन को जो है ये एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको लिखा गया था। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और धारा 21A संविधान में ऐड की गई और उस पर राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, इसको उनका फंडामेंटल राइट बनाया गया। कुछ करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स उन्होंने आर्टिकल 39, 45 वगैरह में किए। मैं इनका डिटेल आपको कल के डिस्कशन में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये परसों के डिस्कशन में बताऊंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन और जो स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट है मैंने उसमें लिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जो अमेंडमेंट 2002 में किया गया, इसको लागू किया गया है 2010 से। मतलब ये करीब 7 साल तो जो है ये ऐसे ही पड़ा रहा। इसके बाद 2009 में एक्ट पास हुआ और फिर एक्ट को और कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट है उसको शायद 1/4/2010 से एक साथ सबको लागू किया गया। इस एक्ट में जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि ये कंपलसरी किया गया है पेरेंट्स को भी कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच को हैं उनको स्कूल भेजें। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स, उनमें भी एक आ गया है कि आपको कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए रखनी पड़ेगी। टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो कैसे दी जाएगी, इसके बारे में भी बात की गई है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है कि जब तक स्कूलों का स्तर नहीं सुधरेगा तो एजुकेशन क्या देंगे आप, इस पर किसी ने किसी स्टेज पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक भी इस बात पर कि जो सरकारी स्कूल हैं जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में है, लाखों की तादाद में है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत थोड़े स्कूल्स हैं, उनकी स्थिति कैसे सुधरे इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बातें बहुत होती हैं, मीटिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, सेमिनार होते हैं,
लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, जब मैंने ये कहा कि इसको लागू करने का एक ही तरीका है कि जो अधिकारी, जो मैनेजमेंट के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको स्टेक होल्डर बना दिया जाए। यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको कंपलसरी किया जाए कि वो भी अपने बच्चों को जो है, जो प्राइमरी स्कूल के, एलिमेंट्री स्कूल के, उनको यहाँ भेजें। जो प्राइमरी स्कूलों के लिए टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनको भी कंपलसरी किया जाए कि अगर आपको इन स्कूलों में नौकरी चाहिए तो अपने बच्चों को भी इन स्कूल में पढ़ाइए। तो अगर वो स्कूल में आप पढ़ाने आएंगे तो आप अपने बच्चों को दूसरे कहीं और क्यों ले जाएंगे? तो उस जजमेंट को जो है ये माना गया कि अरे मैंने तो एफ्लुएंट क्लास के बच्चों के अधिकारों का हनन कर दिया, उनका राइट टू चूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये वायलेट कर दिया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। ये सारे वो थोड़े लोग थे जो एफ्लुएंट क्लास के थे, क्योंकि वो ये कतई नहीं समझ पा रहे थे कि मेजॉरिटी के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी राइट टू ऑप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी वायलेट हो रहा है। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। और वायलेशन किस बात का है? सिर्फ पॉवर्टी का। सारे स्टूडेंट्स एक कैटेगरी है। स्टूडेंट्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन द क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंस और पॉवर्टी। स्टूडेंट एक कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी को एक ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो बड़ी शिकायतें हुई, काफी आर्टिकल लिखे गए, सरकार में बातें कहीं, तो नतीजा कुछ कुल मिला के ये हुआ कि सरकार की इच्छा शक्ति शून्य हो गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर अपने सही तरीके से लागू हो तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं पूरा भरोसा करता हूँ। देखिए, मैं पॉलिसीज के विजडम पर कोई कमेंट बहुत आसानी से नहीं करता, क्योंकि पॉलिसी सब ठीक हो सकती है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। इस केस में जो एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ इतना है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो सबसे बड़ी तादाद में है, सबसे ज्यादा लोगों को कैटर करते हैं, मेजॉरिटी जैसे जो गरीब लोग हैं, उनका जब तक स्तर नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और उनका स्तर सुधारने का एक ही तरीका है कि वो लोग जो इसके मैनेजमेंट में, जो इसके केयर टेकर में टेकिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सबको इसका हिस्सा बनाया जाए। जब वो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, एजुकेशन का स्तर सुधर जाएगा इन स्कूलों का, तो बाकी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएगी। Yes, can you read remaining questions and comments? Acha, okay, Vikas. Yeah. There are no questions in on the Facebook. Okay. यहाँ comments में okay. There is one question by Suhas from NAPM. Education has always been considered as an instrument of discrimination against women and deprived social groups. Is this what is reflected in the NEP 2020? ये एक सवाल है। और NEP 2020 का चैप्टर हमारा परसों आ रहा है। अगर आप बेटर समझते हैं तो इस क्वेश्चन को हम रिजर्व कर लेते हैं और परसों हम इसको साथ में जवाब दे देंगे। तो जब मैं NEP 2020 को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो उसी के साथ इसकी भी बात आ जाएगी। जी, तो इसको हम चलेगा। ओके। और इसके बाद एक बड़ा लंबा सा कमेंट है निरंजना राध्या जी का। और हाँ, ये लिखते हैं, मैं इसको शायद दो भाग में करना पड़ेगा, तो मैं पढ़ता हूँ। Sir, thank you very much. I am great admirer of your judgment in 2015 and wrote abundantly in Kannada and demanded the government to bring a legislation to enforce. In 2017, when a report was submitted to strengthening government schools in the state in which I was the special expert advisor. हाँ, इनका सवाल है कि what is the status of this judgment and how do we take forward? इस जजमेंट की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपील ऐसा नहीं की और इसको लागू भी नहीं किया गया। उस समय जब ये जजमेंट हुआ था तो यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन के मिनिस्टर थे श्री राम, I think this question you better respond in English because Professor Niranjana Aradhya is from Bangalore. Yes, तो आपने अभी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा ना, that's why no problem. So far as the judgment is concerned, the state has not filed any appeal against this part of against the judgment. The then government, the basic education minister, made a statement in the assembly that he is in favor of this part of the judgment and he wants that it should be implemented. He made a statement in assembly that his children are now aged enough, they are not at the level of elementary school, but he will ensure to send his grandchildren
in the government schools. Now, this statement made by the then minister put the bureaucracy in a lot of troubles. They met the chief minister and others. And thereafter, the basic education minister portfolio was changed. It was handed over to somebody else. Yeah. And then the government just keeps silence over the matter. I am told by one chief standing counsel in the Allahabad High Court that some contempt matter filed by some private person in Supreme Court is pending for implementation of judgment, in which Supreme Court has issued notice to the state government authorities as to why they should not be punished for contempt, but nothing further has happened there. Still, is it pending before the Supreme Court, sir? Supreme contempt matter is pending. Okay. So I will read next part of the same question. Dr. Niranjana Radhya says that another question is that you have described medieval education provided opportunities to all. However, J.P. Nayak in his book described the status of education at the end of 18th century as follows. So he gives a quote of J.P. Nayak's book. The Indian society was then highly stratified, hierarchical, and inegalitarian. There was a small group of well-to-do persons at the top consisting of the feudal overlords and their dependents and supporters. The bulk of the people, however, were poor and underprivileged. The scheduled caste, who were treated as untouchables, and the scheduled tribes, who were not integrated into the mainstream, formed the lowliest, the poorest, and the most exploited groups. The educational picture broadly reflected this socio-economic background of inequality. The access to the formal system of education was ascriptive, mostly based on birth, and restricted to the literary and priestly caste or classes, well-to-do landlords, moneylenders, and traders. What is your observation on this? You see, in the ancient period, as I have said, there was no discrimination with respect to the education for women and men both. And that's why you have, I have given the names of some of the renowned learned people, women experts in the matter. That system as such continued in the Middle Ages when Islamic institutions were established. But in Islamic institutions, education for women to some extent had some problem. During British period, when these educational institutions were established by Christians, the Indian women were not participating in sufficient number. That's why I have given the number of the students in the Christian schools, that out of 1,67,000 and odd, only 4,000 and odd were girls. So that was a situation around sometimes in 1600, 1780. Actually, regarding the historical facts, I may tell you one thing. The historical facts have been collected from where that is a very important aspect. You see, in our olden period, the Indian system was not in the habit of writing the things. In ancient period, we used to write on tamar patras or chhal, wooden chhal, etc. So our basic education depended on shruti and smriti, learning and memory. With the passage of time, we did not prepare any periodical, chronicle, etc. in a regular way. It all started subsequently. For example, in Kashmir, there was a chronicle we find, which was published regularly, Ranjani, कुछ इस तरीके से something. Raj Tarangini, yes. And it was sometime in 1100 and 1200 and all. Actually, what I have found with regard to history, in some aspect I have mentioned in my judgment in Ayodhya matter, there were a large lakhs manuscripts of various things written by different people based on their knowledge and memory. Whatever they had memory, they prepared their manuscripts. The East India Company collected these manuscripts
by hook, crook, every way, and about 16 lakhs manuscripts were collected and stored by East India Company. I have read somewhere, and I mentioned that about 10 lakhs such manuscripts were taken away to England, and 6 lakhs manuscripts were kept in the Asiatic Bengal Society at Calcutta. They were dumped there. Now, some manuscripts were available here and there. What kind of information these documents give, it depends on the memory and understanding of the person who prepared that manuscript. So whatever information we collect from these documents, which we treat as a basic documents, that is not absolutely correct in that way. And the translation which has been given by the British people or other people, I may just give you one illustration. In one such translation of an historical event, the name of the queen, she was Gul Badan Begum. So he has mentioned, translated it as Rose Water Body Wife. This is how this translation was done by the so-called historians in their books. You see, these British people or German people, we say that they were very competent and very expert in Sanskrit or something like that. But the fact is, it is also evident from record. I have found one historical event to be factually incorrect in a source book written by the two Britishers. That was incorrect information. They had an assistance of Pandit expert and Mullah expert. Any information which they received from Hindu people in Sanskrit, etc., they got it translated from that Pandit expert, and then they used to write it. Information in Persian or Arabic or Urdu, they used to get from Mullah expert, and then they write it. What were the credentials of that interpreter or translator? It is not stated anywhere. So all this information which we are having, it is not as exactly as it should be. It requires, in fact, I have suggested many times, and my criticism of some historians in my judgment in Ayodhya has been confirmed by Supreme Court also. They have written a large number of books without verifying any fact, anything, and they are internationally known historians. So that's why I used to give very little importance to all these things unless I corroborate it, I find it corroborated by the source material properly available, properly written. So, Sir, I have a question. yes. Sir, you said in the ancient Indian education system, there was equality among the students, the learners, and there was no discrimination. But Manusmriti and many other Dharma Shastras of the Brahminical system speak differently. What they say is education is allowed for some upper varnas and not for Shudras, etc. So it is there in all the Dharma Shastras, most of the Dharma Shastras of the Hindu religion. Of course, Manu has highlighted it more. So what you say is different from what the Dharma Shastras are saying. Actually, this question of yours is founded on your understanding of the subject or these written scriptures translating literally. You see, initially we did not have any classification based on caste. It was founded on the work performed by the individuals. It has become caste-based much later in point of time, and in fact, after the arrival of the Islamic rulers also. So what has been written in Manu Smriti, if you give a literal interpretation, you may be correct. But then you have to explain how we get the names of Gargi, Maitreyi, and so many other people. How we get the Valmiki, who has written the
Ramayana in Sanskrit itself, there are, you see, there are small illustrations, but illustrations are there which shows that the people, irrespective of caste, creed, sex, etc., were given education. We can't rewrite the entire ancient history again in that manner by reading it or understanding literally today. I can have a lot of discussion on this aspect along with the scripts with me, but at this point of time, my clear statement and my understanding is that there was no discrimination in any manner. We find several illustrations. We give due respect to Vedas, to Kabir, to everybody. We don't make any discrimination. So if you give it, I understand it in a literal way, for political purpose, situation may be different, but otherwise it is not correct. Thank you. सर, मैं मंजुला व्रत हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्राचीन काल से लेकर अब तक का जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सारा समझाया है, इसमें स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज की क्या स्थिति रही एजुकेशन को लेकर? देखिए, एक नाम मैं आपको बता सकता हूँ। आज ही किसी हमारे फ्रेंड के साथ में उसका डिस्कशन आया था, अष्टवक्रा, पूरा नाम मुझे पूरा सही याद नहीं है। अष्टवक्र, हाँ। फिजिकली अगर हम उनके हिसाब से देखें, जो हमारे पास आज फिजिकली डिसेबिलिटी के लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा डिसेबिलिटी उनकी, बट ही वाज वेरी एक्सपर्ट इन शास्त्र, और उन्होंने शास्त्रों में तमाम पंडितों को समय हराया। हमारे किसी किस्म का डिस्टिंक्शन, देखिए, मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाता था, मेरिट नहीं होती तो नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता था। हर तरीके की ट्रेनिंग और शिक्षा सबको दी गई, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी रही हो, चाहे कोई और रीजन रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि हमको बहुत उदाहरण आज इसलिए नहीं मिल सकते कि हमारे पास उतनी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, और हमने कोई बहुत सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया। हिस्टोरियंस ने किया क्या, आपस में डिवाइड हो गए, कुछ अपने को राइटिस्ट कहने लगे, कुछ लेफ्टिस्ट कहने लगे। कोई अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया कि जो हमारे सारे ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, हम उनको सबको इकट्ठा कर ले, उनमें जो कॉमन मटेरियल है निकाले, उसको पब्लिक को बताएं सही क्या है। सबने अपना अपना जैसा जैसा कन्वीनियंट था इतिहास बताना शुरू कर दिया, तो वो तो फिर गड़बड़ होगी। अब आज आप पे जो भी लोग इतिहास से जुड़े हो, आज मैं आपको आह्वान करता हूं, आप कोशिश करिए, इन रिकॉर्ड को निकलवाइए और चीजों को सही लाइए सामने। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कैसे ठीक किया गया। एक वो ओरिएंटल सोसाइटी उनकी के.एम. मुंशी साहब ने की, पुणे की थी, तो उन्होंने रामायण से संबंधित 1950-51 में एक इंटरनेशनल नोटिस पब्लिश किया कि जिस भी लोगों के पास रामायण की, वाल्मीकि रामायण की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ओरिजिनल, वो हमको दे दें, ताकि हम उससे बेस्ट जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसको निकाल सकें। He collected more than 10,000 such scripts, which included the oldest one of 700 and something AD. ये सब हमारे पास, हमारे जजमेंट में भी थोड़ा सा रेफरेंस है उसका। उसके बाद उन्होंने उन 10,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स का अध्ययन करके उसका जो उसमें 4,000 उन्होंने छांटी जो उनके हिसाब से ज्यादा रिलायबल थी। तो उन 4,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो कॉमन मटेरियल था उसको लेके उन्होंने रामायण को संस्कृत में छापा। वो हमारे डिस्कशन के हियरिंग के टाइम पे वो पूरे कई वॉल्यूम में है, वो हमारे पास आई थी। तो कुछ ऐसा अटेम्प्ट करिए जिससे हमें मैक्सिमम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। हियर एंड देयर कोई एक शब्द कहीं से उठा के, एक से दोहा उठा के, एक बात उठा के अगर चलेंगे तो सिस्टम में खराबी ज्यादा आएगी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कम होगी। थैंक यू। सर मुझे तो मैं डॉक्टर एमपी वर्मा मेरठ से, मैं लॉ पढ़ाता हूँ सर, और मुझे तो लगता है सर कि जो अंत में आपने कंक्लूड किया कि स्कूल्स ऐसे हो जाए कि पुअर और एफ्लुएंट के बच्चे एक साथ पढ़ें, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो सारे ग्रीवांसेस हैं ये समाप्त हो जाएंगे।
और इसके लिए विल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड विल पावर ऑफ स्टेक होल्डर इज रिक्वायर्ड। हमें तो लगा कि इससे अच्छा कंक्लूजन और कुछ हो नहीं सकता सर। और मैं तो आज आपको सुन करके मुझे लगा, अभी तक तो मैं जानता था कि आप एक जज हैं, लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ कि यू आर ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट आल्सो। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग अस, थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, so sir. nice. Thank you, thank you. There is one question in this chat box. Should I read it, Vikas? Yes. Yeah. In case there are even any other questions, just read at one go, because I think it's getting late also. So okay. We have to also revert tomorrow. Yeah. ठीक है. Read it and then. So first is sir. But I think we'll keep it as the last now. Last three. Okay. There are three, so I'll read it. Yeah. So, sir, do you think that without banning private school and without establishing common neighborhood school, can equitable education be achieved? ये राममूर्ति का सवाल है। दूसरा है रंजीत कुमार का, वो लिखते हैं कि 2 or 3 years ago, Allahabad High Court had remarked on education of children of peon and collector. Please explain that. और तीसरा कमेंट है सुहास जी का ही, वो लिखती हैं कि गार्गी मैत्रेयी are only 2 names and they are from upper caste. If that is to be respected, what about Eklavya's story? तो ये 3 सवाल है। देखिए, जो ये जजमेंट की बात है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। जी। अब जहाँ तक आपने कहा ना बैनिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, देखिए मैं किसी भी चीज को बैन करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा कहना तरीका यह है कि अगर किसी ने एक बड़ी लाइन खींची है तो उसको छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक दूसरी बड़ी, उससे भी बड़ी लाइन बनाइए। इसको मैं कैसे क्लियर करता हूँ, जब इस सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी, इसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड की होने लगेगी, तो लोग प्राइवेट स्कूलों में कम जाएंगे, वो इन्हीं स्कूलों में आएंगे। अपने प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड कम हो जाएगी, धीमे धीमे वहां पे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, और हमें कोई जरूरत नहीं कि स्कूल बंद करें। देखिए, अगर कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं, तो हमें क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिल रहा है उससे। दूसरी बात यह है कि जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स की, वो भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आपको सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उसके जो भी इम्पैक्ट होंगे। आज आप देखिए, प्रोफेशनल कॉलेजेस में लोग IIT के लिए पहले ऑप्शन देते हैं, फिर नेशनल कॉलेजेस में जाते हैं। जब वहां भी एडमिशन नहीं मिलता तब प्राइवेट में जाते हैं। हम प्राइवेट बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड सुधारना है, और लोकेलिटी से हो या चाहे कहीं से हो, वो सारे लोग जिनको किसी भी किस्म के बेनिफिट्स, फंड्स, पर्क्स, रिक्विजिट्स गवर्नमेंट एक्सचेकर से आ रहे हैं, जिसमें उनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऐसे सारे लोग उन बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएं, वहां का भी फायदा लें। अरे उनको मिड डे मील भी दे दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? हम फ्री में स्टूडेंट एजुकेशन देंगे, फ्री में मिड डे मील भी दे देंगे सरकारी अधिकारियों के बच्चों को। आए तो सही, स्कूल का स्टैंडर्ड सुधर जाएगा, गरीब बच्चों के लिए इतना काफी, और सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। No, sir, but we have to look at the reality. Once, say, some time ago, all these government schools in various states were functioning very well. The student strength was high. But once the government started permitting private schools, the private schools are now established even in some big villages also. They are coming to villages and taking the students, say they are admitting in their schools. So that's why the government schools condition has become like this. Now corporates also are entering and making it a big business. So once we are permitting private operators, so it will be difficult for the public education to continue on a. देखिए, वैसे तो कमर्शलाइजेशन का मैटर कल है, लेकिन मैं आज अभी भी बता देता हूँ। No, I just want to make an observation here. I just want to make. प्राइवेट ऑपरेटर्स के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि हमारे अपने स्कूल कैसे चल रहे हैं। देखिए, सरकारी स्कूल इसलिए खराब नहीं हुए कि प्राइवेट स्कूल आ गए, बल्कि सरकारी स्कूल की डिमांड इसलिए कम हुई कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिरा, तो प्राइवेट स्कूल की जरूरत महसूस हुई और फिर प्राइवेट स्कूल आ गए। अभी स्थिति क्या है? अभी एक फिगर है मेरे पास 17-18 की,
यूपी में करीब 7.5 लाख टीचर्स की पोस्ट है सरकारी प्राइमरी स्कूल में। 1,60,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। तमाम स्कूल हैं जिसमें एक ही टीचर है, एक ही क्लास में जो भी 10-20-25 बच्चे हैं वो सब बैठ के पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये तो आप बेटर समझ सकते हैं। सरकारी स्कूल का स्तर हमने इसलिए बिगाड़ दिया कि हमने ना उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना कॉम्पिटेंट टीचर्स दिए, ना प्रॉपर पढ़ाई का माहौल दिया। इसलिए वो बच्चे जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे अब प्राइवेट में जाने लगे। तो जब जाने लगे, डिमांड बढ़ी तो प्राइवेट स्कूल आ गए। जैसे सरकारी स्कूलों का स्तर ठीक होगा, प्राइवेट की डिमांड कम हो जाएगी। आपका उदाहरण दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में सारे नहीं, लेकिन जैसे मैंने सुना है कुछ सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा किया गया। अब वहां पे काफी लोग इस एडमिशन के लिए एस्पायर करने लगे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपने आप पड़ेगा। उसके लिए कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूम ग्रोथ हुई, लेकिन उनमें एडमिशन जब लोगों ने नहीं लिए तो तमाम इंजीनियरिंग स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। प्राइवेट हमेशा डिमांड के साथ चलता है। सरकार को अपना काम एज एन ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा। जैसे ही सरकार का काम खराब होगा, स्टैंडर्ड बिगड़ेगा, तो प्राइवेट की डिमांड शुरू हो जाएगी। सरकार में सब लोग एलटीसी में, तो सारे लोग चाहते हैं सरकार के एलटीसी में जाएं, सरकार की बंगलों में रहें, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते। इलाज की बात आती है तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते। वहां पे जाने के लिए कौन रह गया, मरने के लिए कोई बेचारा गरीब आदमी। हमें इसको सुधारना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और देखिए ये सब काम एक दिन में नहीं होगा। 20-30 साल में बिगड़ा है तो 10-15 साल में सुधरेगा भी। इससे बहुत ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत है, सिर्फ करने की जरूरत है। एक सिरे से जुट जाइए और करिए। आसमान में छेद होगा, एक पत्थर तभी से उछालिए। I just want to make an observation here. I completely agree with you, Justice, particularly on this issue. If you are able to, kind of upgrade all our government schools on par with central schools, even today, central schools are known for its excellence as well as the quality of education. They are the government schools, and also nobody can compete with the central schools, including the so-called private institutions. So if you are able to upgrade all our government schools on par with the central schools, I think probably the issue of privatization will close down, kind of on their own. We need not compel them to close down. That is the kind of position that I have taken in Karnataka, that every government school should be upgraded on par with the central school. That should be the standard setting. I think probably we need to, particularly looking at 19G, which provides for a kind of a fundamental right for everyone to establish and run an institution as a kind of whatever, even in 2002 TMAPI case. I think probably if we take this route as your advice, see, basically, usually what people say, the best way to, remove darkness is to light the lamp. If we are able to make our government school excellent, I think probably even Kothari said, no parent is willing to send their children to private school, provided if our public school is working well. And you said rightly, even today in Karnataka, Bangalore Medical College is one of the best medical colleges in the country. And first application from all rich to poor go to the medical college. And then only they will look into other medical college if they are not able to get a seat. So I think that is the best example. If a government school functions, if a government college functions, I think that will remove most of the problems that what we are discussing in relation to privatization. This is what my opinion based on my work in the last 4 decades. Exactly. I agree with you. More or less it is consistent with what I'm saying. Yeah. I think, anyhow, we are meeting tomorrow once again. So my humble request is to our chairperson although we are meeting tomorrow, but formally close the discussion of today. Welcome. We are thankful to Justice Agarwal for raising a very important question. And the basic thing which we have now coming close to is that it is the community involvement and the oversight which can correct the government's inequality, which they are particularly creating for benefit of the private and giving
disadvantage to the public institutions. And I think it is a great and a lot of learning in it. There is a lot of discussion which has taken place that shows there is a large number of people who are following it on the Facebook Live also. And it will be also available tomorrow on our YouTube channel. So we are very thankful to Justice Agarwal for creating a very high, good environment of discussion, and also making us that what is our responsibility as a community or as a to bring that awareness so that the system can be recovered for the common and equalitarian society can be start building from here. So thank you, sir. Thank you, everybody who is there. See you. We We will will meet meet. tomorrow at 7, and a repeat link will also be generated, and it will be available tomorrow morning to everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you.